Assalamu alaikum, and welcome to our first ever podcast on the To the Point podcast with me. Today is Omar. Thank you for being here. You're most welcome. And we're gonna talk about an issue. An issue जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी अरसे से है और काफ़ी overlooked है until recently. And obviously by recently I mean in the last couple of years. Of course आप लोगों ने पॉडकास्ट के टाइटल से पिक अप कर लिया होगा कि दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट women's issues in Pakistan. For now, at least in Pakistan. In future podcasts, maybe we'll cover women issues in general, yeah, feminism or something or the other. But for now, we feel that this needs more attention at the moment because it's Yeah, especially in this Noor Muqaddam case, we have seen there's कि नूर मुकदम केस के बाद काफ़ी केसेस सामने आए और बल्कि इससे पहले भी काफ़ी केसेस हमारे सामने आ गए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे चीज़ें जो हैं एकदम से ये सारे इवेंट्स एकदम से होने शुरू हो गए हैं। ये बहुत सालों से होते आ रहे हैं, बट नोबडी डेड टू टॉक अबाउट दैम फॉर ऑब्वियस रीजंस। वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द थिंग इज़, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। I'm gonna give you some numbers here. इन लास्ट ईयर, सिर्फ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस बाय 200%। 200%। और ये जनवरी से मार्च अगर हम बात करते हैं जब लॉकडाउन हुआ है, वो उसके नंबर्स इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। सो वी क्लियरली सी के ये हमारे घर में भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है। इससे पहले जो एक केस था जब एक खातून को हाईवे के ऊपर उनका सेक्सुअल असल्ट की गई है, दैट वाज व्हेन एवरीबॉडी वर लाइक ओके दैट इज इनफ। Yeah, that was bad. That was just horrible. And the funny part was there was some senior officer, I don't want to name him, लेकिन he was like ये खातून रात को, ठीक है, बच्चों के साथ इतनी रात को निकल के क्या कर रही हैं। I mean, she was traveling to another city. It doesn't really matter कि आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो, and it was on motorway. I mean, ये नहीं था कि गली मोहल्ले में या कुछ ना कुछ कहीं पे इवेंट हुआ. It was actually motorway. You know what I mean? The sad part जो यहाँ पे नज़र आता है, at least from this particular example, I'm glad you brought it up because it highlights a very prevalent condition, I should say, in our society. जहाँ पे इस तरह के जब भी वाक़यात होते हैं तो उसमें आप जो है अनफेलिंगली कोशिश करते हैं कि किसी तरह से औरत को ब्लेम किया जाए. Yeah, exactly. Which I find very strange to say the least. यानी आप जो हैं यहाँ पे किस बेसिस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि आप she was apparently in the wrong because she was traveling at night. I mean, क्या यानी कहीं पे लॉ है, रेगुलेशन है या कोई इस तरह की चीज़ है कि औरतों को या मर्दों को या किसी को भी जो है रात को ट्रैवल करना नहीं चाहिए for whatever reason. इसी बरक्स अगर आप ये कहें कि भाई वहाँ पे किसी ने रॉबरी की होती और वो आदमी होता, आई एम श्योर कि ऐसी स्टेटमेंट ना की होती. तो ये मतलब हम औरतों के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और आदमी के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट अलग यूज़ करेंगे. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर. It's Not stupid. only unfair, it's to say. I don't know how else to describe it. It's sort of a patriarchal mindset जो यानी coming in from यानी segueing from this topic, we have issues जो generally होते रहते हैं रेप के क्या कहते हैं वाइफ बीटिंग के, ये यानी they all stem from a similar mindset कह लें या from a similar source, a similar problem where women blaming culture जो हमारी सोसाइटी में जो कूट के भरा हुआ है, वो आपका इस मेथडोलॉजी को प्रमोट करता है, इस आइडियोलॉजी नॉट मेथडोलॉजी, आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, इस माइंडसेट को जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. वाइफ बीटिंग के केसेस के अंदर
वाइफ बीटिंग्स में आप देखते हैं वहाँ पे जी औरत ने कुछ किया होगा, हस्बैंड मजबूर था, ये था, कम ऑन मैन, दोज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। एग्जैक्टली, आई मीन सिर्फ यही केसेस मिलते हैं कि भाई आदमी ने औरत को मार दिया, आदमी ने बच्चों समेत औरत को मार दिया, लेकिन जब ऐसा केस आता है कि औरत ने आदमी को मार दिया, उसके ऊपर एक अलग सी नज़र से उसको देखा जाता है, विच आई थिंक इट इज़ रॉन्ग यार। आई मीन क्राइम इज़ अ क्राइम, ठीक है, इट डजंट रियली मैटर दैट कोई आदमी कर रहा है या औरत कर रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ़ आदमी ने रेप किया, ठीक है, औरत शी इज़ अ विक्टिम यार, ठीक है। इन स्पेशली इन नूर मुकद्दम केस, इफ़ नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट नूर मुकद्दम केस, आदमी ने उसको बेरहमी से, आई वुड से, आई मीन बहुत बेरहमी से उसको मारा, ठीक है। एंड रिसेंटली ये भी पता चल गया कि उसने उसका रेप भी किया था। नाउ एक आदमी जिसने एक इंसान का पहले मर्डर किया, फिर उसका गला काटा, और जब वहाँ पे पुलिस आती है तो वो ही इज़ क्लियरली क्लेमिंग कि हाँ भाई मैंने ये मर्डर किया है। अच्छा, अब वो पॉइंट आपके पास है, कोर्ट में जब ये केस आपके पास जाता है, वहाँ पे जो है बयानात बदल रहे हैं। वो उससे पहले अगर आपको ये पता चल गया है कि इसने मारा है, मर्डर ऑफ वेपन के ऊपर इसके फिंगरप्रिंट है, आई डू नॉट सी वाई वी आर ड्रैगिंग दिस केस, ठीक है। आई मीन सिंपली इसको फांसी दो। और आई वुड से, आई मीन आई नो कि काफ़ी लोगों को ये होगा कि नहीं भाई सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए, बट डू दैट, इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल। ये जो मैं आपको केस बताया था जो मोटरवे पे हुआ था, उन आदमियों को सज़ा मिली थी। द प्रॉब्लम इज़ के हम जो एक्ट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको तो हाईलाइट करते हैं, उसका जो सोल्यूशन होता है क्या हम उसको हाईलाइट करते हैं? कभी हमने बताया कि भाई हाँ इनको जो है फांसी दी गई है या इनको जो है ये सज़ा दी गई है? लेकिन हमारा मुआशरा क्या है, ड्रैग करते जाओ, एक केस लंबा बनाते जाओ, खुद ही ना खुद ही कभी ना कभी निकल जाएगा। एंड दिस इज़ अ डॉटर ऑफ डिप्लोमेट, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता या मैं खुदा ना खास्ता इस सिचुएशन में होते हैं, हम तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब एक इतना गवर्नमेंट में काम करने वाले के साथ अगर ऐसा हुआ है तो हम और आप क्या हैं भाई? मतलब हम तो कुछ भी नहीं है। और I see what you're saying, man. I see what you're saying. देखें, मेरा अल्टीमेटली जो डिसकंटेंट कह लें is not just with the justice system, it's with the way these things are viewed within society. इस तरह के cases I'm pretty sure on a daily basis crop up करते रहते हैं. It's not like this was just a one-off thing और हमारी society इतनी perfect है कि इस तरह का कुछ नहीं होता है. But this, like you mentioned, she was a diplomat's daughter. But my point being, because she was a diplomat's daughter is why all of this garnered so much attention. And this is sad. Exactly. And this is very sad. Because you don't need to be different in order for these things to stand out. But unfortunately in our country you do. This is something that should be highlighted on a regular basis as often as could be done. And I feel as untouchable as the media feels itself, it's very much responsible for this. It's very much responsible for the lack of other cases or normal people being sidelined in favor of these more popular and more prime time victims. Na'uzubillah. Because that's the sad reality. Unless you're famous, unless you're what do you call it, vicarious viewing material, तब तक जो है आपको इतना टेंशन मिलेगा नहीं. आप अगर आम शहरी हैं या आप बेचारी कोई अनफॉर्चुनेट वाइफ या सिस्टर या किसी की मदर इवन जो हैं, आप इस तरह से आपके साथ अगर होए खुदा न खास्ता, which unfortunately does happen. I mean it's not unheard of and it's not uncommon. अब बात ये है कि जैसे तुम मीडिया पे पॉइंट आउट कर रहे हो, the point is you don't get that much attention. You don't give them that much attention. You don't give them an outlet. You don't go out and
and search for people like this. You don't help और यार their voices अगर to be heard. अटेंशन की बात करते हैं ना, हम लोगों का पता है क्या है, मीडिया का ये है, चलो यार इसके ऊपर जो है ना एक स्टोरी बनाते हैं, एक मसाला डाल के एक स्टोरी बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, That's the word. बजाय के आप किसी भी नॉर्मल विक्टिम की स्टोरी लो, ठीक है, और उस केस को फॉलो करो ताकि उसको जस्टिस मिले। लेकिन नहीं भाई, हमें तो मसाला मिल गया, अभी हम इसके ऊपर और थोड़ा सा मसाला डालेंगे और इसके ऊपर हम पूरे मीडिया के ऊपर फैला देते हैं। दिस इज़ द रीज़न आई वुड से कि काफ़ी लोग ये चीज़ कंप्लेन नहीं करते या उसकी मतलब नहीं बता पाते, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई कल को मीडिया हमारे पास आ गया, जो हमारी बची बचाई जो इज़्ज़त है उसकी भी जो है जाएगी, ठीक है, जो फैमिली में थोड़ी सी इज़्ज़त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द होल पॉइंट। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के क्यों इतने केसेस जो हैं वो इतनी ख़वातीन या विक्टिम्स जो है वो चुप हैं, क्योंकि हमारे माशरे में सिर्फ़ और सिर्फ मसाला बिकता है और कुछ नहीं बिकता, और जस्टिस तो होती नहीं है, ठीक है। जस्टिस आप अगर किसी मीडिया को बोलेंगे ना जस्टिस कराएं, वो आपके पास सिर्फ 2-3 दिन के लिए हो गए। लाइक नूर मुकद्दम केस, ठीक है, पहले आपने देखा बहुत हाईलाइट हुआ, ठीक है, आपको आवरली अपडेट्स आ रही थी कि क्या हो रहा था। उसके बाद फिर ओलंपिक शुरू हो गई, ठीक है, वो तो एक अलग ही कहानी है जो ओलंपिक में हुआ, ठीक है, ओलंपिक शुरू हो गई। उसके बाद ये नूर मुकद्दम केस अब आहिस्ता आहिस्ता साइड वेस्ट आता जा, यही जो बात आपने की है ना, इसमें एट द सेम टाइम अब अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स, कंदील बलोच का जो केस था, वो जो है, यानी देखें, we're not here to debate the morality and immorality of both of the women involved in these cases, because of course वो एक separate topic है वो तो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, and it is very unpopular, ठीक है, at the time जिस तरह की emotions वगैरह रन कर रही हैं, we'll get to that in a future podcast, but ये morality of their actions aside, the point being कि नूर मुकद्दम केस हाईलाइट हुआ, गायब हो गया। कंदील बलोच का, it was a very public and ridiculous honor killing, I mean quote unquote honor killing, but the point being कि ये इतना उछलने के बाद भी 2 महीनों में गायब हो गया। I mean what exactly. where is the justice, where is where are other people like him, people like him? यहाँ पे capital punishment, I'm a very big proponent of capital punishment for this, क्योंकि आप अगर publicly execute नहीं करेंगे, and this is to be frank for all the so-called quote unquote human rights activists and all of these of course sissy people, they're gonna be a lot of bashing from those guys. I'm sorry, it's there, it's real, it's out there. Basic, yeah, criminals thrive on society's understanding. आप जितना और अंडरस्टैंडिंग होते रहेंगे उतनी उसकी एडवांटेज लेते रहेंगे। इट्स अ फ्लॉड सिस्टम। कैपिटल पनिशमेंट इंश्योर्स कि भाई आप इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, कोई भी, इफ़ यू इवन थिंक अबाउट इट, ये आपका नतीजा होगा। एग्जैक्टली, एंड इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आपको अब सरेआम, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लाइक आई एम गोना बी अ बिट unrealistic over here, ठीक है, and I don't know if I'm gonna be immoral or what. For example, एक आदमी है, ठीक है, उसने रेप किया, उसको सज़ा दो, सज़ा देने के बाद उसको फांसी पर लटकाओ and broadcast that shit, ठीक है। I mean, I'm gonna sound very harsh, but broadcast that, show it to the country, भाई ये तुम्हारे साथ ये होगा if you do that. दैट इज़ अ केस। उससे, क्योंकि टीवी तो आप लोग सब देख रहे हैं, ठीक है, तो आई एम श्योर दैट विल इम्पैक्ट देम अ लॉट। न्यूज़ कौन पढ़ रहा है? न्यूज़ तो आधे ज़्यादा हमारी आवाम जो है वो ऐसी है कि वो तो अपना नाम नहीं लिख सकती, ठीक है। तो मीडिया एज टीवी एज इंटरनेट इसी मेन स्ट्रीम जो हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, टिकटॉक ऑफ कोर्स, सो दैट इज़ अ थिंग। I mean, I know it's a very harsh thing, but I think that we have come to that point. How many more cases we're gonna see? Zainab, I'm actually gonna. Sorry, I'm breaking in. I just want to expand upon what you just said because I like the idea. I really like what you just said. Okay,
and I agree strongly that this should be done. But there was a point where you said that most of our people don't know how to write their own names. ठीक है? Problem or not problem, I would say let's expand on this and do it publicly as well as broadcast it. Because see, for the tribal areas or जहाँ पे लोग की proliferation of technology कह रहे हैं, let's say, जहाँ पे जी टीवी और ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हैं, उन जगहों के लिए they are more remote, they are more how we say unregulated. वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा लोकल होता है, थोड़ा you know, यानी to some extent law and order is more or less in the hands of whoever is ruling that particular section of पंचायत वाला जो सिस्टम होता है, पंच या something like that, I don't know. So my यानी मेरी suggestion ये है कि instead of just broadcasting it, इसको एक public form of punishment किया जाए, यानी as a judicial system, as a how we say, because you need to set an example, right? यानी इस तरह के फिर areas के अंदर आप कैसे example set करेंगे? Because when you're talking about your population who will view this on television, that's a very small percentage compared to the rest of the uneducated masses that are out there who will probably not even watch this on television, or who would not be watching these particular channels or how we say medium, any medium, yeah. Exactly. Mediums जो हैं उनके similar नहीं होंगे. तो I'm just saying कि उन लोगों को अगर हमें educate करना हो with respect to basic human decency, unfortunately in this manner, in this subject at the moment, उनको educate करने के लिए you need to devise an appropriate deterrent. क्योंकि broadcasting it जो है आपकी quote unquote पढ़ी लिखी आवाम के लिए जो है काफ़ी होएगा, because यानी when they see that happening, hell, at the moment these जिस तरह के लोग जो होते हैं, they are cowards at heart, they're predators. That's why they prey on the weaker sex, that's why they prey on children, that's why they prey on people who they feel that they can take advantage of. You never see them take advantage of I don't know, say a man on a man, for example, unless the other man is weak or is indisposed in some way. Yeah, that is a very good point. That is a very good ज़्यादातर point. जो यानी इन लोगों की ज़्यादतियाँ होती हैं is against someone who's weaker than them. That means intrinsically they're cowards. अंदर से डरपोक हैं. तो इनको डराने के लिए जो है ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी कि भाई आप अपना हशर देखें, फांसी होएगी, या I would even be क्या कहते हैं, I'd be in favor of beheadings as well, or stoning as the Sharia punishment for it exactly. is. Because for rape, I mean, that just imagine being stoned to death. You're strapped out there and people are throwing stones at you, and you will keep being hit over and over again until you bleed to death, or you get a particularly large stone struck somewhere where you wish you would be in that position. You'd be wishing that happens. Yeah, it's so enough to raise your goosebumps, you know. Exactly. Any punishments like these were devised for a reason. It's because that is the case. That is exactly, that is the end story के हमारे यहाँ punishment नहीं है. Punishment के साथ जो है, आपने education के ऊपर बात की है, एजुकेशन भी नहीं है. एजुकेशन इन सेंस, ठीक है, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा. एजुकेशन की सेंस के इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ स्टेज, ठीक है. अब मैं इसकी जो है ये नूर मुकद्दमे केस में बात करता हूँ. अब ये जो उसने किया है, ठीक है, अब उस लड़के के अचानक से नहीं दिमाग में आया कि हाँ भाई चलो आज मैंने ये काम करना है, ये मैंने एक्ट करना है. इट स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है. इट्स पेरेंट्स ड्यूटी कि वो देखें कि भाई क्या चेंजेस आ रही हैं, ये चेंजेस आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, ठीक है. वी हैव टू रेज दी एजुकेशन ऑफ रेप, जो कि हमारे माशरे में काफ़ी तबू समझा जाता है. I'm sorry, I'm breaking in. I think we need to talk about something very related to this. You mentioned the guy
mentioned the guy here. Tell us a little bit more about his background. वो उस लड़के के, ठीक है, उसने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, और उसके अम्मा भी जो है, ठीक है, वो भी साइकोलॉजी की एक क्लिनिक चला रही है. नाउ इफ़ यू आर इन साइकोलॉजी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर किड, ठीक है. Exactly. या अगर नूर मुकद्दम शी वॉज विद हिम फॉर सम टाइम, ठीक है, तो इवन शी शुड हैव पॉइंटेड आउट कि यार यहाँ पे कुछ मसला है, ठीक है. दैट इज़ अ थिंग कि इस चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट नहीं करते. मेंटल हेल्थ, मेंटल ब्रेकडाउन, स्ट्रेस, दीज आर द थिंग्स कि हम लोग की डिक्शनरी में है ही नहीं. स्ट्रेस है भाई, काम ज़्यादा है, काम कम करो, ठीक है. मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. मेंटल हेल्थ क्या होता है भाई? पागल हो गए हो, ये पागल. मेंटल हेल्थ को जो पागल से कंसल्ट हम लोग करते हैं, ठीक है. इस चीज़ की एजुकेशन है नहीं भाई. दिस इज़ वेयर एजुकेशन शुड बी. मतलब पढ़ाई से ज़्यादा जो है आजकल जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो इन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन ही नहीं है. यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट कि व्हाट मेंटल इश्यूज़ आर, व्हाट मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट, ठीक है. आप वैसे ही आ रहे हैं जैसे पुराने 50 सालों से आप वैसे लगे आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा. ऑफ कोर्स देयर आर ग्रेट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल in this. You're right. And of course I think your Noor, जो इबाद की वाइफ है, उन्होंने साइकोलॉजी, she has done psychology, right? If I'm not wrong. She's a master's in psychology. Yeah, so of course you can expand on this. Because see, the thing is, what I'm starting to feel, to be honest, is that it's not just education. It's because the example that we just talked about, this guy who brutally murdered this woman who By the way, we're just saying this guy because we don't want to name him and fame him, okay? Exactly. He's just a guy. Exactly. He's just a guy. He's just another. She was, yeah. Another one of those predators, those horrible human beings. He doesn't deserve any fame. He doesn't deserve to be known. True. And I just wanted to point it out, to the audience and to the listeners, yeah. So this guy, he was educated. He was very well educated. He had a foreign schooling. He had parents who were schooled quite well, in fact, and he had knowledge and how I say, because from what I was able to understand from what's been going on social media, he was also a counselor at that clinic, which meant that he had done and if I'm not wrong, वो या उसकी वालदा child psychology में थी. See, that's where I'm gonna diverge a little bit from using the word education just to describe this. It's not about education. It's more about awareness. Awareness of basic human rights, basic human concepts, basic decency, morality, in fact. Let's boil it down to morality. जो आपकी जो primary जो distinction होती है between right and wrong. So this is what I feel, even if you're educated, and clearly this guy was educated, if you're not able to distinguish between cutting off the head of your lover and kicking it around like a football, and you think there's nothing wrong with that, dude, you're seriously messed up. Something's wrong fundamentally. I'm pretty sure कि ये एक दिन में नहीं हुआ है. Of course not. Of course not. My concern is that if someone as highly educated as this is lacking such basic moral precepts, what about all the people who are uneducated, who are unsupervised, who are I don't have words at the moment. I mean, you get the point. You see where I'm going with this. The number of people who are like this, who are not being taken care of, who are not shown the right way,
and the incoming generations of people like this, they're there in our society, they are living in our society, they will be living in our society because हमारे पास structures ऐसे नहीं हैं. And by structures I mean educational, whether at home, whether in school, whether I need a better word than this. I need a better word than education. I mean शऊर कह सकते हो या एग्जैक्टली आई मीन इवन आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बट लेकिन इसी बात को देते हुए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, ठीक है, जहाँ पे ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात होती है, वी आर एट 153 आउट ऑफ 156. तो हमारे नीचे सिर्फ 3 है, इराक, यमन एंड अफगानिस्तान. सो दिस गिव्स एन आइडिया कि वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड. We say that we have this is a Islamic country and there is gender equality and the laws are same for both genders. This number is not saying that. That is completely opposite. Okay? And we just claim that this is a Islamic Republic of Pakistan, but are we really doing what should be doing? ठीक है, इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता. आई मीन हम को टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया लाइक बिकॉज हम लोग यहीं पे रह रहे हैं. यहाँ पे जो प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट जो ख़वातीन को दी जाती है वो कहीं नहीं दी जाती. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी लाइन में खड़े होते हैं और आई वुड से अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, कि हम लोग किसी जगह खड़े हुए हैं लाइन पे, किसी अपने वेट कर रहे हैं अपने टर्न का, किसी खातून वहाँ पे आती है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उनको जाने देते हैं. आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उन्हें जाने देते हैं. तो ये सीन, you know what I'm talking about. I know, I get you. I don't know, man. I don't know. This is deep because, and we haven't even gotten on to female infanticide that apparently is also a thing in Pakistan, which we will just now in a bit. But because right now we are focusing on violence against women in general, because that's like the hot topic. And I want to talk a little bit more now about female infanticide and the mindset that goes behind it and how far back it goes. And that's another thing that really bothers me. ये आपकी नाउज़ुबिल्लाह कल्चरली जो कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पास बेटी हुई है तो इट्स I don't know why, but it's a point of great dishonor. Yeah, the thing is कि ये कितने सालों से चलता आ रहा है. कितने सालों, not just कितने सालों से. This is, यार, आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से you were cautioned against doing this. You were told explicitly. It was mentioned in the Quran कि इस तरह के जो हैं, यानी just imagine, this is, how long has it been? 1400 years and older, because yani, if we're referencing the Quran here, that means that it is an established practice because of which yeah, exactly yani उससे पहले common थी, उससे पहले consider की जा रही थी, and do not bury the female child. I mean, come on, how much more clear do you need to be? Exactly. So, yani, we haven't. Sorry, you were saying? And the thing कि यार एक बच्चे को दफनाना, that is, I think, you can't exceed than that. That requires a special kind of screwed up, man. That requires you to be a special kind of screwed up. Like I talk about my son, ठीक है. Obviously बच्चे शरारतें करते हैं and parents उनको थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का दबका लगा भी देते हैं. And me and my wife, ठीक है, after doing that, हम लिटरली उसको 5 मिनट बाद we were like, अच्छा क्या खाना है, क्या मतलब, that's how parents are. I cannot imagine one would go and do that. I mean, I have no words के how that courage भी नहीं मैं कहूँगा. It's not courage, man. It's not courage. It's I don't know how they do that. And
how they do just that and how bury they live with a themselves. live soul, and they I, know that soul is alive, and they do that. they're totally इसी okay तरह with it, by the similarly, way. They're totally okay with doing that. yeah, and That's what's so shocking. It blows my mind when I think about it, because here you are with your newborn daughter. Okay, newborn. It's a baby. It is small. It is helpless. It is yours. It came from your wife. ये आप लोगों and का in बच्चा most of है. the cases, in most of the cases, wife I would say कि वो इस चीज़ की रजामंद नहीं होती, ठीक है। ये नॉर्मली जो केसेस होते हैं उसमें अलग से ही आदमी जो है वो अपनी अना को, ईगो को लेके पता नहीं क्या लेके उसको मतलब अलग से ही उसको दफनाता है या जो भी करता है। इन पाकिस्तान देयर इज वी हैव सीन कच्चे के ड्रम भी, ठीक है, मैनी टाइम्स। नाउ ईदी सेंटर इज़ द वन which he started, ठीक है, taking them in and provide them shelter. God bless that guy. He has done amazing job. I mean, But the thing is I mean, how they do that, I and know. how do they live with that guilt? I don't know. It's see the real question we should be asking is what's missing? What's missing in these people? Where is your basic sense of Humanity. I mean, Humanity. God forbid. I mean, You don't even need education for that. Clearly, you don't need education for I that. don't even know if we should be calling it humanity, because clearly it's humans that are doing this. I don't see where it's humanity anymore, but for lack of a better word, let's go with humanity, because you don't do that. You just don't do that. It's less than basic. I mean, I don't know, man. I really don't know. चलो, और यानी इस्लाम argue. में तो बच्चियों को, ठीक है, लड़कियों को आपको बरकत माना गया, ठीक है। Exactly, it's a blessing. Yeah, it's a blessing यार, it's a blessing. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सल्लम exactly उनकी 4 बेटियां थी, बिल्कुल। तो there is a hadith, if you recall, जहाँ पे जो है 3 बेटियों के पेरेंट्स को जो है जन्नत नसीब करने के उन्होंने खुशखबरी दी थी, 2 बेटियों की भी दी थी। माशाल्लाह। And how can you just throw that away? You can just you know. So that's what I'm saying कि सिर्फ अब ये नूर मुकद्दम का केस नहीं, बल्कि ये और भी हमारे सोसाइटी में काफ़ी से इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। ये तो ऐसा टॉपिक है, आपको ये इस मीडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। मीडिया में बहुत ही रेयर चांस है कि कोई ऐसा आपके पास न्यूज़ आएगी कि हाँ कोई बच्ची जो है फलाना उसको किसी ने दफना ही दिया, अनलेस एंड अनटिल वो पकड़ा जाए। यहाँ फिर that's the other issue. Exactly. I mean, Because you won't imagine कि कितने because ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं। the problem is that it's the whole community. It's not just one person. Yes. Everyone's Exactly. in it. Everyone's okay with it. Exactly. Everyone thinks it needs to be done. What the hell? The problem is that हमारी सोसाइटी या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा बनाया गया, you try to help, you will be famed as well. It's crippled. It's crippled. आप भी That's the problem. आपको भी घुसाया जाएगा, तो हमारा ये भाई जो हो रहा है होने दो, हमें इसमें नहीं पढ़ना क्योंकि हम भी फंस जाएंगे। That should change. That protection should be provided by the government, by the justice law. ये जब तक हमें नहीं होगा कि हाँ भाई हम लोग if we try to help someone we will be protected, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, nobody will dare to bring a change. The sad part is that when speaking of the justice system, अभी भी यानी in relation to the justice system helping out against women abuse or violence against women in general, जो amendments या जो new laws pass की गई हैं, they are very recent. They're very recent. Very recent. I mean, 2011 you have the Acid Crime Prevention Act. 2011 again
मतलब आपको यार prevention इतने of 80 anti-women साल लग गए हैं practices. इस I चीज़ mean, में. give me a break. 2011? Okay. Now, after 2011, there's a big gap to 2016, when the next amendment to the criminal law came in. I mean, what the hell? You were sleeping in these 5 years or what? Exactly. I mean, ऑनर किलिंग के अगेंस्ट भी अमेंडमेंट जो आई है वो भी 2016 में, यानी जब आती हैं तो धड़ 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 करके आती हैं, यानी कि और वी वेट फॉर सम इशू एग्जैक्टली या कोई इवेंट के लिए, ठीक है, व्हाई डोंट वी प्रिवेंट इट, ठीक है, व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर सम इनोसेंट विक्टिम, ठीक है, कि हाँ ये स्टोरी आएगी, ये मीडिया में उछलेगी, ओह वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एसेस, ठीक है, लेट्स मेक अमेंडमेंट. That's not how it should be, yaar. इट्स अ You have रिएक्टिव to अप्रोच, दैट्स द होल protect. प्रॉब्लम. You have to protect and prevent these accidents, यार. This accidents, या जो भी आप कहेंगे इनको, I mean, it's crazy. See the Then thing, we talk about child marriages. ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस ये शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और इसके ऊपर ना मतलब कोई अगर अमेंडमेंट है भी उसके ऊपर जो है कोई फॉलो नहीं किया जाता. सेम सिचुएशंस के भाई हम इस चीज़ में क्यों पढ़े, हमें तो इस चीज़ पे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है. आपके जो छोटे देहातों में जो हो रहा है वो तो हम क्या करते हैं, नहीं यार उनको ये इस चीज़ का शऊर नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है, वो तो करते रहते हैं. वो भाई क्यों करते रहते हैं, आप जाके रोको ना, ठीक है, आप नहीं रोकोगे तो कौन रोकेगा. अल्टीमेटली जो सारे NGOs और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, perhaps it's part of their agenda. I mean, I'm not saying it's not, but Exactly, yeah, but we it is. don't see any change. I mean, if it's part of your agenda, there's more than enough of you operating in our country. Don't give me that कि भाई हम बहुत छोटे से ये हैं organization. USAID is a freaking massive organization. So don't give me that crap about it being so limited in its impact and all of that bull. Because you have the funds, you have the resources, you have the reach, you have influence all the way to the levels of the government. If you wanted to do something, you could have done something by now. Okay, this is not yani a problem that you can just claim because of lack of resources or reach or what have you. Child marriages in particular are that वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो आपकी ब्लेंड होती हैं with religion in order to justify them. Everyone knows it's immoral. Everyone knows it's immoral, but you give it legitimacy by linking it in some way to religion. In this case, to marriage, to the nikah and the marriage contract in general. So you have, I'm sorry to say it, but you have clerics, you have Maulvis, you have all of these religious people from your community or from an overall national level who condone these practices, who are saying that it's okay to do it because it's religiously fine. It's a very narrow religious interpretation, sure, that they go for, but the problems that this practice causes is Islam is not just supposed to be read out of a book and followed on a literary level. I mean, it's not a set of instructions that you just follow blindly. The job or the responsibility for religious scholars is to interpret it, which they do. I'm not saying they don't, but in some places they need to stand up. The ones that are doing good, जो सही रास्ते को जो है प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, they need to step वो up. कर नहीं पाते. वो कर नहीं पाते is यार, I'm just going to slightly disagree with that because कर the नहीं. problem Go on. the problem with this I say is that there was a recent case where we are going a bit side track, but it is sort of connected, where this Maulana Sahab, ठीक है, he was doing act with a guy, ठीक है, जिसको वो कुरान पढ़ाते हैं. Now the thing is कि अगर these are the people where we take our problems, ठीक है, and we try to find the answers in Islamic way, if they are being immoral, ठीक है, now इनकी वजह से बाकी लोगों का भी जो है नाम Sorry, वो बदनाम I'm होगा, going ठीक to है. qualify that statement a little bit.
they're not being immoral, they're not being moral enough. They're trying their best within their capacity, which seems like it is a little limited, but they're trying to be moral. Because if we say they're being immoral, means that they're just saying that bad things are good and good things are bad, and it gives that impression. No, they're trying. Let's not. बात वही है कि नहीं मैं आई थिंक हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कन्फ्यूजन हो रही है. वी विल टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट लेटर ऑन इन लेटर पॉडकास्ट. बट द प्रॉब्लम इज के in our society we generalize. That is another problem, because a generalization is a blanket under which you just sweep the issue and forget about it. You can't do that. That's not how you solve problems. Generalization is just an excuse. आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ओए यार ये तो सबके साथ होता है, ये सोसाइटी में हमारा होता ही ऐसे है, therefore we'll do nothing about it. That's wrong. ये कि अगर सोसाइटी में होता है, try to change it. You try to change it. नहीं यार ये तो होता ही है. होता ही है. That's the sad part कि nobody gives a damn. ठीक है, nobody's take a stand. Now even in this case, I'm actually glad. ठीक है, after this Noor Muqaddam case, I have seen a lot of accounts on Instagram. ठीक है, they are naming and shaming these guys. ठीक है, who clearly flirt with them. ठीक है, and they do all sort of weird shit going on. That is, what is going on the internet. So they are actually naming and framing them. So I'm actually happy that these women, and most of them are really in their teens. ठीक है, they are educating themselves and people around them. So I'm glad that it has started. Well, it started a lot late, but it has started. The downside is that it started, or it has started again with victims. Yani, these women that you're talking about, the impression that I'm getting is that they have been affected. Yes. They want to raise awareness for it so that someone else doesn't get affected. It shouldn't be that way. That's what we're trying to say here. Because that's just sad. I mean, it's a good thing that they're doing it. All power to them, man. I mean, this is something that needs to be done by people higher up than them, more responsible than them. And by that, I mean parents, education systems, and eventually the government. But this is something that needs to be started at home. At home. Exactly. It's not someone else's responsibility. It's not the government's responsibility. It's the parents' responsibility, because that is where a child's education begins. That's where it begins. I mean, especially with this guy case in Noor Muqaddam. They hid the problem. ठीक है. They hid the problem. यार मतलब इससे पहले के जो है, I think there was a case कि इसने US या UK में भी रेप किया था. ठीक है. And they वहाँ से इसको लेकर आ गए थे. I mean, if it has happened, you have to see. I mean, अगर नहीं भी हुआ, ठीक है, still you have to see कि बड़ी मतलब अगर कोई आपके बच्चे में कोई इशू नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, you have to raise awareness. आपको उसको पकड़ना है, बजाय कि नहीं भाई ये उसको जो है मतलब छुपा देते हैं क्योंकि ये माशरे में जो है acceptable नहीं होगा. You have to control that. You know what I'm saying? That's the thing. This hide culture that stems from जो idiotic जो concept है हमारे family honor का. And it's I don't know, man. It's a lot of issues. We'll break it down in the next couple of podcasts as well, because I have a pet peeve that I'm sitting on, to be honest, which I feel that it needs to be put out there, and because everyone's a part of it, unfortunately, as and not even society. Put out there, not only put out there, it should be started. I mean, this should be our होली ग्रेल. ठीक है, इट शुड बी आवर, मतलब उसको पकड़ के चलो और इसके ऊपर अमल करो. सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है ट्विटर पे आया, ठीक है, उसको शेयर कर दिया, रीशेयर कर दिया, शेयर लाइक all comments and all that. ठीक है, we have to act on that. Because ultimately the time for that is over. I mean, you've shared enough, you've changed your Facebook profile picture enough.
that you stand in solidarity with so and so. I mean, it doesn't do It's anything. not enough. It doesn't It's not do enough. anything. It's not enough. Okay, let me just So, be blunt here. It doesn't do anything. So we will, of course, there is a lot more we can talk about, and we will in the future podcast. We just try to close this podcast over here. That try one thing I would advise is try and see what is the issue with your son, okay, or daughter, or anyone that is close in your family. If you find anything abnormal, exactly. If you find anything abnormal, please report it. Don't try to hide it. No, okay? not report it per se. By report it, we mean fix it. Take them to the right people. Exactly. Do whatever is necessary to solve it. Don't hide it. Don't just hide it. Yeah. And about women, well, obviously you can't really be sure कि आपका मतलब कौन कैसा निकलेगा, ठीक है, कौन रेप करेगा, कौन नहीं रेप करेगा, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि जो एक ना रेप. It's just advice के be careful out there, ठीक है. It's a cruel world, and it goes to the men as well, not just women. Just be careful out there. Be careful. If somebody, as if there is someone, learn self-defense, learn to protect yourselves. Exactly. Do jiu-jitsu. I mean, that's the best advice I can give. Learn to do jiu-jitsu. There are programs out there that will teach you how to deal with bullies, with people in a street fight, how to get out of situations where you're the physically weaker opponent. Jiu-jitsu is because amazing. The thing is that we don't know who will be the next victim. Okay? It could be any one of us. Okay? So we have to be prepared. The worst part is that until society changes, these things are necessary. Yeah. So if you find someone who really needs help them, support them, be there for them, I would say. इसी के साथ we will conclude the podcast. Any final words from you, Ibadat? No, man. I think I'll let you end this. So inshallah, thank you for listening. And for those of you who are watching on the YouTube, thank you very much. And inshallah, hope to see you soon. Take care. Thank you all. Bye-bye.